Hello, my dear students. Good evening and welcome to EnglishFunda. I am Vinod Shankaran and I welcome you all to this particular sessions. These sessions are going to be your foundation for improving your English in the sense that vocabulary and reading comprehension skills. I guarantee if you keep watching these videos, पक्के तौर पे नित्यांक वेलकम बेटा वेलकम I'm so happy to meet you all also. दीक्षा वेलकम, आरती वेलकम, जय हिंद बेटा। याद रखना कि ये सीरीज आपको जरूर करना चाहिए हर दिन। इससे बेनिफिट दो चीजों की हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ जाएंगे प्लस वोकैबुलरी। और मैं क्या करूंगा, बड़े बड़े जो सेंटेंसेस हो जाते हैं कई बार हमको समझ नहीं आता, सर इतने बड़े सेंटेंस हो गए समझ नहीं आए, इसको कैसे तोड़ के पढ़ें। तो हाउ टू ब्रेक अ सेंटेंस इनटू लॉजिकल फ्रैगमेंट्स एंड रीड, ये सारी चीज सिखाऊंगा। ओके और अभी इसका इन सेशंस का ये देखो मैंने द फीचर्स ऑफ दिस सेशंस एंड यू विल लव देम। ठीक है, चलो शुरू करें। ओके और भी कुछ बच्चे आ जाए, नित्यांक, दीक्षा, आरती, प्रेरणा, निधि, हर्षिता, वेलकम। ठीक है, बाकी सब भी आ जाए तो फिर मजा ही आ जाए। ठीक है, अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, किसको कौन रोका है कि नहीं। नाउ व्हाट आर दीज सेशंस बेनिफिशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर। ये सेशंस किस चीज के लिए बेनिफिशियल है और किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बेनिफिशियल नहीं इंपॉर्टेंट क्यों है, तो लेट अस सी। सबसे पहले these sessions will enhance your reading skills। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई एग्जाम ऐसे बता दो जो आजकल ग्रामर पूछता है, वो छोड़ देते हैं, सीजीएल वगैरह की वो भी बदलने वाली है, सीजीएल गवर्नमेंट एग्जाम्स भी बदलने वाले हैं, सीडीएस में दोनों ही चीज का मिक्सचर होता है। अगर डिफेंस एग्जाम्स में जाते हो तो दोनों ही चीज होते हैं, ग्रामर भी होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी जम के होता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, टू हैव गुड स्किल्स इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए ये बहुत मदद करेगा। Second है, these sessions will improve your vocabulary and teach you ways to recall those words। जो भी वर्ड सीख रहे हो उसको रिकॉल भी करवाएंगे। ऐसे नहीं कि भाई हर दिन क्लास हो गया, आप अपने रास्ता मैं अपने रास्ता, पिछले क्लास में जो सीखा उसको मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं टेस्टिंग भी आपका करवाऊंगा। आपको हर क्लास के बाद ये बताना पड़ेगा आपने कितने वर्ड सीखे, कितने फ्रेजेस सीखे, ये इसको मैं करवाऊंगा। ठीक है, अभी बताता हूँ, पूरी से ध्यान से सुनना, तुमको समझ में आएगा कैसे वो होगा। These sessions will teach you complex sentence structures and how to break them into comprehensible fragments। हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर को तोड़ के कैसे मैं कॉम्प्रिहेंसिबल फ्रैगमेंट बनाऊं और उसको समझूं कैसे जोड़ के, ये भी सिखाऊंगा। अच्छा, लास्ट है, कुछ आपको पार्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, डोंट वरी माय पिक्चर इज इन फ्रंट। अबव ऑल दीस विल एनहांस योर नॉलेज अबाउट योर वर्ल्ड as the articles and editorials are handpicked from a wide variety of topics। एक बेटा एक चीज समझ लेना, गलत तो नहीं बोलूंगा, मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग स्टेलर सर्विस। कई बहुत सारे लोग हैं, हमारे पहले भी आए हैं और भी आते रहेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब वो हिंदू के एडिटोरियल्स लेकर आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं। दे पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू टीच यू दोस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो वन स्टेप फर्दर। भाई एक्सपीरियंस है तो फिर उसका जरा से फायदा भी तो होना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज पिक अप आर्टिकल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ हिंदू नहीं, गार्डियन से भी ले लें, न्यूयॉर्क टाइम्स से भी ले लें, हाँ, अपना क्या बोलते हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से भी ले लें। ये वर्ल्ड व्यू तो हमें मिले, वर्ल्ड व्यू तो मिले, कौन सा मीडिया कैसे सोचता है, ठीक है, उसके बारे में आइडिया तो लगे। ठीक है, एंड वी विल टॉक अबाउट अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, आईटी, फिलोसफी, साइंस, कुछ भी तो आ सकता है। बैंक पीओ वाले से पूछना आजकल कैसे कॉम्प्रिहेंशन के पैसे जाते हैं। इसलिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग आर्टिकल्स फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। इससे क्या होगा, जनरल नॉलेज भी बढ़ता है। नाउ व्हाट इज विनोद सर्स अप्रोच टू अचीविंग द ऑब्जेक्ट। सर आप कैसे हमें पढ़ाओगे, ये सारी चीजें बोल तो रहे हो, बड़ी बड़ी चीजें तो बोल रहे हो। गुड इवनिंग आदर्श, थैंक यू वेरी मच, बैब, क्रिस एंड शिवांगी, हेलो बेटा, एंड yes बेटा, good lawyer Nityank, yes we can do that, we can do that, that's a very good suggestion, we can try that also. Now एक after a long time others of course, इंटरेस्ट के साथ कैसे पढ़ें नित्यांक, that is what you will learn from here।
एग्जैक्टली व्हाट यू आर आस्किंग मी कि भाई, क्योंकि क्या होता है ना, एडिटोरियल हर किसी को पॉलिटिक्स में पसंद तो नहीं आता, पॉलिटिक्स हुआ, इकोनॉमी हुआ, हर किसी को पसंद तो नहीं आता. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, यू आल्सो स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्ट इन द टॉपिक्स यू डिड नॉट लव. जो तुमको पसंद नहीं आया था उसमें भी इंटरेस्ट आने लगता है. ऐसे ही है ना. भाई क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट नहीं खेलते, आप खेलना शुरू किए गुल्ली डंडा. गुल्ली डंडा के बाद में क्या हो गया कि भाई खेलते 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 गुल्ली डंडा खेल, चलो क्रिकेट भी खेल ही लेते हैं. तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो भी आ ही जाता है, याद रखना. ठीक है. अच्छा, ये मेरा अप्रोच कैसा है ये सब ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, कि भाई बच्चे मेरे पारंगत हो गए, माय स्टूडेंट्स आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, ये कैसे हो सकता है? तो मेरा अप्रोच ये है, व्हाट आई ट्राई टू डू इज, देखना, मैं कोशिश करूंगा पहले लाइव यूट्यूब सेशंस, पहले हम लोग यूट्यूब सेशंस लाइव लाइव लेंगे. इसमें आप अपना क्वेश्चन वही पूछोगे, लेकिन इसमें हम कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे. मैं तुमको पैसेज समझा दूंगा. ओके. मैं पैसेज समझा दूंगा, पैसेज को कैसे पढ़ा जाता है वो समझा दूंगा, वोकैबुलरी के कुछ स्किल्स हम लोग सीख लेंगे. लाइव यूट्यूब सेशंस, लर्निंग रीडिंग कॉन्सेप्ट्स, लर्न अ फ्यू वर्ड्स एंड लर्न अ फ्यू फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, जो भी आएगा उसको लर्न करेंगे. देन कम्स द बिगेस्ट पॉइंट, एक क्विज़ेस ऑन संडे. ये क्लासेस जो चलेंगे ना, ये मंडे टू सैटरडे चलेंगे. मंडे थ्रू सैटरडे वी विल हैव क्लासेस, एंड ऑन संडेज ये जो 7 दिन आपने, ये जो 6 दिन आपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सीखे, वोकैबुलरी सीखा, ये सारे के सारे आपको संडे को बैठ करके आपको एग्जाम में देना पड़ेगा, क्विज में देना पड़ेगा. तब वोकैबुलरी आपकी रिवाइज हो गई. ठीक है. और जो पैसेज आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था उस पैसेज को उठा के मैंने मान लो दे दिया, और उसमें क्वेश्चंस भी दे दिया, इन्फरेंस क्वेश्चंस का, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, टाइटल वाले क्वेश्चंस, टोन वाले क्वेश्चन, हो गया काम आपका. राइट. राइट. और रिपीट द प्रोसेस, विल कीप डूइंग दिस ओवर अ पीरियड से, चलो 6 महीने करके देखते हैं. 6 मंथ्स में अगर अच्छा हो गया तो विल स्टार्ट दिस सीरीज अफ्रेश. बात समझ में आई बेटा, हाउ वी वर्क, कैसे काम करते हैं, समझ में आया? अच्छा, ये सब ग्रीन हो गया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, ये सब ग्रीन ग्रीन है तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये अपना चीज बदल लेगा जरा से इसको. विनोद सर का हाथ पड़ना जरूरी है इसमें, इसीलिए वो ना मान नहीं रहा कि भैया ऐसे कैसे हो गया. ठीक है, तो इनको कर देते हैं. ठीक है, इनको कर देता हूँ. ठीक है, जिस जिसको भाई मेरा हाथ लगने के बाद ही ठीक होगा तो ले भाई, लीजिए लीजिए. चलिए, आप भी सही हो जाइए. इनको भी सही कर देते हैं. ठीक है, आप देखना ये ठीक हुआ कि नहीं, देखना. थैंक यू. थैंक यू मीरा. थैंक यू. हाँ, फिलोसफी वगैरह में आ जाता तो फिर हम पकड़ भी नहीं पाते, हमको समझ में भी नहीं आता है कैसे क्या करना है. ठीक है. वी गो बर्सक, क्या आ गया सर, कैसे क्या करें सर. ठीक है. अच्छा. हाँ, वो आ गया तो मैंने भाई कर ही तो दिया, कलर कलर में ही आ जाएगा, क्या सोचते हो. गड़बड़ हो तो विनोद सर के हाथ में है. ठीक है, इतना भी जानना चाहिए बेटा, ये भी याद रखना. याद रखना, वॉट एवर यू डू, यू हैव टू बी अडेप्ट एट विथ डिजिटल स्किल्स. याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट का सारा सॉफ्टवेयर चलाने आना चाहिए, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाने आता है, उसमें माहिर हो मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी सब सॉफ्टवेयर भी चलाने आना चाहिए. यस. ओके, वेरी नाइस. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो व्हाट डू वी डू, यहाँ पर मैं एक बार दोबारा समझा दूं तुमको. व्हाट डू वी डू, लाइव यूट्यूब सेशंस, देन वी रीड द, देन वी लर्न रीडिंग कॉन्सेप्ट्स प्लस वोकैबुलरी. रीडिंग कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं. क्विजेस लेते हैं संडे को. ठीक है, मंडे थ्रू Saturday we learn, on Sunday we take quizzes and repeat the process, and you will see a huge change. करा, विश्वास करो, क्लासेस पे आओ, फ्री क्लासेस हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस, उसका फायदा उठाओ. नाउ प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस. ये लाइक लिखा हुआ है. ठीक है. ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ. रीड इट नाउ. समय लो, आराम से पढ़ो, मैं चुप रह रहा हूँ. ठीक है. टेक योर टाइम, रीड इट एंड टेल मी व्हाट द पैसेज इज अबाउट. फिर मैं तुमको साथ में पढ़ाऊंगा. ठीक है. फर्स्ट रीड इट इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में पढ़ लो, जितना समझ में आया. ठीक है. एंड दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम अ मैगजीन कॉल्ड द अटलांटिक. इट्स अ ब्यूटीफुल मैगजीन, उससे लिया गया है. पढ़ना.
और मैक्सिमम शेयर करो बेटा, लाइक करो, अपने दोस्तों को भी बताओ। ऐसे क्लास में नहीं आओगे तो फिर धीमे धीमे आना तो पड़ेगा, तभी तुम यू विल हैव द क्विज़ेस ऑन संडेज दीक्षा। मंडे से लेके सैटरडे तक, यू मंडे टू सैटरडे यू विल लर्न these skills and you will also learn vocabulary and all these words and these passages I'll ask on Sunday. Now read. Navya, welcome beta. Good evening. Don't ask me the words. मत बोलना कि sir what do we mean by pummel, what do we mean by grammar or all those things. Just read and try to understand and then I'll read it for you. फिर साथ में भी पढ़ेंगे. Done? Okay. Okay. Now let us do the reading. You do the reading with me now. Okay. So once you have read it and the same passage continues, there is the next slide also. But keep these things in mind. अगले वाले slide के साथ match कर लेना, ठीक है? लेकिन let me read it for you now. Okay, let's try this. Now come here. 2.5 years. Now COVID is here to stay. The title here itself. Now what do you think? The title is apt या sir title में गड़बड़ी है? अभी तक एक ही पैराग्राफ मैंने पढ़ा, मैं 2 पैराग्राफ हमने पढ़ा. डू यू थिंक द टाइटल इज एप्ट? चलेगा ये टाइटल या और कोई होना चाहिए था? मंडे टू सैटरडे यू विल हैव दिस सेशंस. ऑन संडे यू विल हैव द क्विज ऑन द ऐप, नॉट हियर, ऑन द इंग्लिश फंडा ऐप. हर्षिता सेज इट्स एप्ट. ठीक है, एप्ट का मतलब सही, बोले कि सूटेबल है. कोविड इज हियर टू स्टे, ये सूटेबल लग रहा है. कितने लोगों को सूटेबल लग रहा है? हर्षिता को तो लगा. आरती, डू यू थिंक? नित्यांक सेज यस इट्स एप्ट. वेरी गुड. अदर्स ठीक है. इट सीम्स टू बी एप्ट. अभी तक तो सर सही लग रहा है, आगे भी पढ़ के देखते हैं, हो सकता है. अच्छा, आई पुट द टाइटल्स, सम ऑफ द टाइटल्स में एक्चुअली बी रॉन्ग. लेट मी वार्न यू. Some of the titles may actually be wrong. I put them purposefully so that you understand whether the title used is suitable to the passage. Okay. So now let's come to this. Two and a half years and billions of estimated infections into this pandemic. Kanak, welcome beta. SARS-CoV-2's visit has clearly turned into a permanent stay. Okay. लगता है कि भाई permanent stay में ही है. Okay. Now come to the next one. Thank you, Vitashi. Now, experts knew from early on that for almost everyone, infection with this coronavirus would be inevitable. Now, what do we mean by inevitable? Experts knew from early on. From early on का मतलब क्या है? शुरुआत से ही उनको पता था. शुरुआत से ही पता था. For almost everyone, हर किसी के लिए, infection with this coronavirus would be inevitable. और हर किसी को इस कोरोना वायरस को तो पकड़ना ही पकड़ना है. You're not late, Abhinav. It's okay. We just started. Okay. Now tell me, what do we mean by inevitable? What can you make of it? मैंने खुद से कोशिश करना. Don't go into Google and start searching for the meaning of the word. Okay. Simply tell me what can you guess from here. क्या लग रहा है? Inevitable का meaning क्या लग रहा है? अनिवार्य रूप से. Very good, beta. Very nice. Okay. Inevitable is something that cannot be avoided. हाँ? जिसको thwart नहीं किया जा सकता है. Very good. Inevitable means something that unavoidable is the meaning. Inevitable, unavoidable. Now, as James Hamblin
As James Hamlin memorably put it back in February 2020. What does that sentence mean? Memorably put it back in February 2020 means February 2020 में ही बता दिया था, जो कि हमें हर किसी को याद आता है, you are likely to get the coronavirus. He had said back then कि ये फरवरी में ही बता दिया था कि भाई हर किसी को कोरोना वायरस तो होना है. By this point, in fact, most Americans have. जब तक ये लिखा जा रहा है तब तक मैं तो most Americans को हो ही चुका. But now as wave after wave continues to pummel the globe, what does it mean? What does it mean? But now as wave after wave continues to pummel the globe, a grimmer reality is playing out. Radhe Radhe Beta Dhananjay. Okay. A grimmer reality is playing out. You are not just likely to get the coronavirus, you are likely to get it again and again and again. Look. Look at that. Okay. Wave after wave continues to pummel the globe. What do you think? Pummel का मतलब क्या है? Hi Chanchal beta. So what do we mean by pummel? The wave after wave continues to pummel the globe. What does it mean? Pummel means to batter. बहुत जोरदार मारना. Okay, that's what it is doing. Coronavirus is actually battering us into submission. Everybody has to simply accept. वाह भैया जो जो होना है हो भैया जितना मारना है मार लो. ठीक है. अच्छा. Pummel the globe. A grimmer reality is playing out. What do we mean by grimmer? What do we mean by grimmer? And is it a word alone या ये word कहीं और से बना है? Has it come from somewhere else or it's the same word? Pummel का मतलब spread नहीं बेटा. Pummel का मतलब जोरदार मारना. Okay. And grimmer reality? Grimmer कोई word है क्या? No. The word actually comes from grim, the adjective. Grim का मतलब serious. Grimmer, more serious. Grimmest, most serious. वही है और कुछ नहीं है. Grimmer reality is playing out. What do we mean by playing out? What do we mean by playing out? Playing out, grim means dark, I think, and unpleasant. Absolutely, Abhinav. Serious also. अच्छा एक बात बताओ इसमें हमको. What do we mean by playing out? I'm waiting for your answers. No, that is okay. Sivya, well, what do we mean by playing out? Happening. Absolutely, Diksha. Absolutely. Playing out is happening. Very, very nice. Now, you're not just likely to. Now, that sentence is easy enough. Now, let's read this. I personally know several individuals who have had COVID in almost every wave, says Salim Abdul Karim. Now, what is this sentence in? ये sentence किस में है? Active voice में है, passive voice में है, direct speech में है, indirect speech में है, वो क्या है? Yes. No idea? No idea. कुछ बोल ही नहीं रहा है. आदर्श, अभिनव, no idea. This is direct speech, beta. This is direct speech. As soon as you see double quotes, it's the words of the. These are the words of the speaker. So the words of the speaker are always enclosed in double quotes, and that becomes direct speech because the words as used by the speaker are put in double quotes. And these questions also come in your exam. Convert direct speech into the indirect speech. Yes, right. Okay. Now to the next one. Okay. So it says, I personally know several individuals who have had. Now, what is the tense here? Who have had. What is the tense? Is the sentence correct or even correct?
Is the sentence? No, that was active voice. Very good. Active voice and direct speech. Absolutely. Nityank, Shivangi, absolutely. Active voice and direct speech, both. Have had is passive structure, Dhananjay. Is it? What is the tense? देखो कैसे सारी चीजें आके present perfect tense. Absolutely, Diksha. Very nice, beta. Very good. Very good. It is present perfect tense. Very nice. So we come here. So, have had COVID in almost every wave, says Salim Abdul Karim, a clinical infectious diseases epidemiologist. Who is an epidemiologist? Somebody who studies epidemics. Somebody who studies epidemics is an epidemiologist, an expert also, and the director of the Center for the AIDS Program of Research in South Africa, which has experienced five meticulously tracked surges, which has experienced five meticulously tracked surges. What does it mean? Any idea? समझ में आ रहा है? बताना. ये ऑर्गेनाइजेशन क्या किया बताना. ये ऑर्गेनाइजेशन 5 सर्ज का मतलब क्या है? अचानक जो फैलता है, झटके के साथ गश करता है, हाँ, जोरदार तरीके से निकलता है. 5 सर्जस को बहुत मेटिकुलसली ट्रैक किया है. व्हाट इज मेटिकुलसली ट्रैकिंग? विथ केयर एंड ड्यू डिलिजेंस. एब्सोल्युटली अभिनव, बहुत ध्यान से उस 5 सर्जस को उसने ट्रैकिंग किया है. नाउ, एंड वेयर जस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, और साउथ अफ्रीका में सिर्फ 1/3 ऑफ द वैक्सीनेशन पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड. नाउ हाउ डू यू नो ये वेयर किसके लिए लिखा हुआ है? कई बार देखो सेंटेंस काफी दूर चला आता है. द एबिलिटी टू रिलेट वेयर टू साउथ अफ्रीका इज वेरी इंपॉर्टेंट. If I ask you the question, where is the population, where is only 1/3 of the population vaccinated in according to the passage, then the ability to say, sir, it is South Africa, because that is what we are talking about. The ability to keep connecting pieces of information is very important. Okay. Now, experts doubt that clip of reinfection several times a year will continue over the long term, given the continued ratcheting up of immunity and potential slowdown of variant emergence. Now, this sentence seems very typical. Very typical. अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर. The last sentence very typical. Can you give me the gist of that sentence? What is it trying to say? Okay, I give you time. I'll keep my mouth shut. Okay, you tell me what that last sentence means. This is what I'm going to do. No, Abhinav, you did not understand it correctly. Read the sentence again. You did not understand the sentence correctly. Because you see, there are 2 dashes. Ganesh, good evening, beta. There are 2 dashes, and there is a clause within. That must be read as a bracketed expression. Okay? Read this as a bracketed expression. Just hold on. Let me show you what to do. Okay? Leave this as another sentence. Okay? Leave this as extra information. Now read it. Now read it and tell me what is the meaning. नहीं आदर्श, नहीं लिखा है वैसा. वो नहीं लिखा है. वही तो प्रॉब्लम है. मैंने कहीं पर मैंने सेंटेंस को समझ नहीं पाते. एक्सपर्ट्स को क्या लगता है? माय क्वेश्चन इज, एक्सपर्ट्स को क्या लगता है कि वेव आफ्टर वेव आता रहेगा या नहीं आएगा? एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगेन सेम क्वेश्चन पूछ जाता मैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार
that it will keep happening or it will not happening. It will not happen. According to the experts, the re-emergence is going to keep happening or it's not going to happen. I'm waiting for the answer because that is the most important part of the paragraph. वेरी गुड शशांक रीड शशांक्स कमेंट्स देखो आपने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया क्या नो बडी पेड अटेंशन टू दिस ओके एक्सपर्ट्स डाउट इस पे आपने ध्यान नहीं दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज आई कुड हैव आस्क्ड योर क्वेश्चन हियर according to the experts and I give you four options and if you miss that word that particular word you're gone that sentence is gone क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स को नहीं लगता है कि भाई कोविड इज हियर टू स्टे बट हियर फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है लगता है कि ये रहेगा सेकंड पैराग्राफ में अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स इट सीम्स द कोविड इज नॉट गोइंग टू स्टे एंड व्हाट डू वी मीन बाय क्लिप व्हाट कैन यू गेस might be the meaning of clip शशांक ने बहुत सही बताया था नो आइडिया okay now this clip is nothing but frequency clip का बहुत सारा मीनिंग है एक तो क्लिप हम जो जानते हैं ठीक है और क्लिप का मतलब फास्ट रेट ठीक है और क्लिप का मतलब काटना भी होता है छोटा करना भी होता है क्लिप करना नेल्स को क्लिप करना okay the word clip has many different meanings and he's scoring at a very fast clip if you listen to the cricket commentary Harsha Vogle keeps saying he's scoring at a fast clip okay at a fair clip अच्छे स्पीड में कर रहा है तो स्पीड भी मीनिंग होता है ओके नाउ एक्सपर्ट्स डाउट दैट द क्लिप ऑफ री-इन्फेक्शन सेवरल टाइम्स अ ईयर विल कंटिन्यू ओवर द लॉन्ग टर्म में नहीं होता रहेगा मतलब ये शॉर्ट टर्म ही है काफी दिन तक चलने वाला नहीं है गिवन द कंटिन्यूड क्यों गिवन द कंटिन्यूड रैचेटिंग अप ऑफ इम्यूनिटी इम्यूनिटी क्या हो रहा है बार बार रैचेटिंग हो रहा है क्योंकि बार बार जो इन्फेक्शन हो रहा है उससे बेहतर होता जा रहा है एंड पोटेंशियल स्लो डाउन ऑफ वेरिएंट इमरजेंस और भाई वेरिएंट भी आता ही नहीं रह जाएगा जिंदगी भर आता नहीं रह जाएगा तो वो भी स्लो होगा तो इसके चलते इट इज डिफिकल्ट टू से अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स दैट this COVID is here to stay and it's going to go on and on. That is the meaning of this. Done. मजा आया अभी तक में हाँ अभी तक मजा आया ये बताओ तो आगे बढ़ते हैं एंड डू यू वांट टू डू इट लाइक दिस देन टेल योर फ्रेंड्स प्लीज कम सिट इन द क्लास ठीक है भाई मेरे क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तुझे मजा भी आएगा लेकिन वह पढ़ाई में मजा आ जाए तो पढ़ाई में मजा आया तो तब तो मजे ही आ जाएंगे ठीक है तो प्लीज डू कम टू द क्लासेस ओके एंड प्लीज बी देयर समझना इसको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन संडेज आई विल टेक द क्लास okay now let's come to the next one now read this up read quickly now you have a fair background of what the passage is trying to say you have a fair background of what the passage is trying to say now read it fast अच्छा normally क्या होता है ना तो leaving CDS and SSC normally the passages are about 400 to 500 words 400 से 500 शब्द होते ही ठीक है लेकिन बड़ा या छोटा फर्क क्या पड़ता है as long as you have learned the concepts everything works read
हम्म एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं अभिनव? करता हूं ओके 2 minutes 2 minutes to finish this. Done. Time for these classes will be at 7 p.m. every day from Monday through Saturday. Good evening beta Poonam. Done. Okay, the first question is this: what do you think is this line? This line is the opinion of the experts or it is the opinion of the author? ये ऑथर का ओपिनियन है या एक्सपर्ट्स का ही ओपिनियन है? what do you think it is? बताता हूं बेटा. शशांक I'll tell you. Very good, Abhinav. This line is by the author. This line is by the author. He says, but a more sluggish rate would still lead to lots of comeback cases. Very good, Diksha. Sluggish का मतलब क्या है? Slow, lazy, slow. ये सब मीनिंग है sluggish का. अगर sluggish अगर उतना तेजी से नहीं भी फैला तब भी ऑथर का कहना है कि तब भी बहुत सारे कमबैक केसेस होंगे. मतलब मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग टू गेट रिपीटेड कोविड इन्फेक्शन. इट सेज Aubrey Gordon, an epidemiologist at the University of Michigan, told me that her best guess for the future has the virus infiltrating each of us on average every 3 years or so. 3 साल में एक बार ये infiltrate करेगा. What do we mean by infiltrate? Getting into it, getting into the body. Okay, and then also, barring some intervention that really changes the landscape, she said, we will all get SARS-CoV-2 multiple times in our life. Now, the meaning of this particular sentence, look at this. This is such a beautifully written sentence here. Barring some intervention that really changes the landscape. What do you mean by this sentence? ऐसे पढ़ाई करनी होगी बेटा. Okay, when you start reading such sentences, when you start making sense of such reading, then reading comprehension is the easiest thing to do. तुम बोले भैया ग्रामर वगैरह मत दो, reading comprehension दो, मेरा सारा एग्जाम, सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर हो जाए. समझे? Now tell me the meaning of that. Barring some intervention that really changes the landscape, we will all get SARS-CoV-2 multiple times in our life. What does it mean? Yes, you can always watch these as recorded sessions. It will be available on YouTube also, and it will be available on the app also. Can anybody give it a shot? कुछ कोई बता सकता हो क्या what it actually means? No? Chalo, let me explain. Let me explain it here. It says barring some intervention. अगर बार का मतलब क्या है? रोकना. बारिंग सम इंटरवेंशन, यदि कोई बीच में रुकावट नहीं आई, मतलब कोविड को फैलने से रोकने के लिए कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं आई या उसके राह में कोई बाधा नहीं बना, दैट रियली चेंजेस द लैंडस्केप. जो सिनेरियो है, चेंजेस द लैंडस्केप का मतलब क्या है? आज का जो सीन है उसको बदलने लायक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई. तो उस एक्सपर्ट का कहना है, किनका कहना है? ऑब्री गॉर्डन का कहना है कि वी विल ऑल गेट SARS-CoV-2 मल्टीपल टाइम्स इन आवर लाइफ. हम सारे लोगों को मल्टीपल टाइम्स में कोविड होना ही. ठीक है. देन इफ गॉर्डन इज राइट अबाउट दिस थ्राइसिस पर डिकेड पेस, ठीक है, 3 बार 10 साल में होना ही है भाई. अगर बोल रही है कि भाई बोले कि क्या बोले, यहां पर मैं उसने क्या कहा था?
every 3 years or so. Every 3 years or so का मतलब है कि 10 साल में 3 बार हो जाएगा. यहाँ देखना कैलकुलेशन देखो. If Gordon is right about this thrices per decade pace, that would be on par with what we experience with flu viruses, which scientists estimate hit us about every 2 or 5 years, less often in adulthood. तो ये क्या बोलेगा, अगर गॉर्डन सही है तो 3 बार एक दशक में होगा. अगर इस हिसाब से सही है तो ये तो और कुछ नहीं है, बाकी सब फ्लू वायरस के जैसे ही हो जाएगा. बाकी सब फ्लू वायरस के जैसे ही होगा, और वो भी अडल्टहुड में कम ही परेशान करता है. इट ऑल्सो मैचेस अप वेल विद द डॉक्यूमेंटेड केडेंस. केडेंस का मतलब है धीमे 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 खत्म होना. It also matches up with the well-documented cadence of the 4 other coronaviruses that seasonally trouble humans. Yeah, frequency. Cadence also means frequency. Of the 4 other coronaviruses that seasonally trouble humans and cause common colds. Should SARS-CoV-2 join this mix of microbes, अगर SARS-CoV-2 भी इन्हीं माइक्रोब के ग्रुप में जाके मिक्स हो जाता है, उसी का एक मेंबर बन जाता है, दैट occurs on an intermittent schedule. ये कोल्ड वायरस क्या करते हैं, बीच बीच में हमें ट्रबल करते हैं. व्हाट इज द वर्ड फॉर ट्रबल हियर? आई रेड अ वर्ड विच मीन्स ट्रबल. विच इज दैट वर्ड? मैंने एक वर्ड पढ़ा जो कि जिसका मीनिंग है ट्रबल. विच वन? अभिनव, वेल वेल, दैट्स अ गुड ट्राई बेटा. हाँ, कुछ इंटरवेंशन हासिल करके, वेरी गुड सेशन, यू गॉट द आइडिया, वेरी नाइसली रिटन. Very good, Abhinav. Irk means annoy, yeah, trouble. Irk means very nice. Irk means annoy or trouble. What is intermittent? What is intermittent? The next word. Irk us on an intermittent schedule. What do we mean by intermittent? Hmm. Intermittent का मतलब क्या है? बीच बीच में होना. Okay, now let's come back to this again. Intermittent schedule, we might not, it says, should SARS-CoV-2 join this mix of microbes? उन्हीं के ग्रुप में जाके ये SARS-CoV-2 भी जाकर के ज्वाइन, अगर उसका मेंबर बन जाता है तो that occurs, microbes that occurs, ठीक है, जो बाकी सारे कोरोना वायरसेस हैं उसी ग्रुप में ये जुड़ जाता है, जो कि हमें हमेशा ट्रबल करते रहते हैं बीच बीच में छोड़ छोड़ के. वी माइट नॉट हैव टू वरी मच. हमें ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. द फैक्ट दैट कोल्ड्स, फ्लूस एंड स्टमक बग्स रूटीनली रीइंफेक्ट हैजंट श्रेडेड द सोशल फैब्रिक. श्रेडेड का मतलब क्या है? टुकड़े टुकड़े करना. भाई कई बार पेट खराब हो जाता है, कोल्ड फ्लूस हो जाते हैं, स्टमक बग्स हो जाता है, कई बार 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 भी रीइंफेक्शन हो जाता है. इससे हमारी सोशल लाइफ तो खत्म नहीं हो जाती. सोशल फैब्रिक का मतलब है सोशल लाइफ तो खत्म नहीं हो जाती. फॉर लार्ज पोर्शंस ऑफ द पॉपुलेशन दिस इज एन इनकन्वीनियंस. बहुत लोगों के लिए सिर्फ इनकन्वीनियंस, असुविधा रह जाएगी, कोई बीमारी नहीं रह जाएगी. पॉल थॉमस, एन immunologist at St. Jude's Children's Research Hospital in Tennessee, told me, perhaps, as several experts have posited since the pandemic's early days, SARS-CoV-2 will just become the fifth cold-causing coronavirus. ये भी चार तो ऑलरेडी है, ये पांचवा बन जाएगा. Now there is one more. Read this also, and this is the last. अच्छा, एक बात बताओ, is it a very long session? You want a session to be like this, or you want it to be shorter, or you want it to be longer? बताना. मैं बेटा ये तो इंग्लिश फंडा, अपना ही ऐप, बादल, खुद का ही ऐप बना लिया हमने, उसी में चलाते हैं. ठीक है, कम से कम अपने मन के लायक तो कर पाएंगे. Want longer sessions? Okay, beta. One article complete. This is one complete article. Very good, beta. Very nice. Good, good, good. Very nice. We'll keep this. Very good. हाँ, बादल पढ़ाता था बेटा, उसके बाद दूसरे कंपनी में चला गया, अब अपना शुरू कर दिया. Now read. Now read. 2 minutes and read.
दिल्ली बादल बेटा, दिल्ली रहता हूँ। अब आ गया ना बादल बेटा, अब हूं मैं हर दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक 7 बजे शाम में मैं यहां पर मिल जाऊंगा। बादल, डन, ओके। नाउ यू टेल मी, नाउ यू हैव रेड इट, हाँ? अब बताना कि इज द टाइटल apt or it should be changed a little. Here to stay is okay. Done. So what I want you to know, tell me is it, what do you think? Is the title okay or slightly change करना पड़ेगा लगता है sir? Because all these, हाँ, ऐप का बेटा लिंक इसमें दिया हुआ है, ठीक है? ऐप का लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हाँ, 1 hour session is what we will do. 1 hour session is what we'll do. Okay. What does this say? Or maybe not. What does it mean? Yeah, or maybe not is what? For that, we have to go back to the previous slide. It says it will become one of the, in the last slide, it was discussing that SARS-CoV-2 virus is going to become one more virus in the list of 4 viruses. One more will get added, and it will become 5 cold viruses. And we were taking it easy in this slide. But the author here comes and says something else. He says, or maybe not. It's not going to remain just that one more cold virus, cold causing virus. This virus seems capable of tangling is getting entangled. Okay, phas jana. Tangling into just about every tissue in the body, affecting organs such as the heart, brain, liver, kidneys, and gut. Gut का मतलब पेट. किसी को भी ये क्या बोलते हैं, इन्फेक्ट करता हुआ लगता है. It has already claimed the lives of millions while saddling countless others with symptoms that can linger for months or years. ठीक है, कई लोगों को तो कंज्यूम ही कर गया, मौत के घाट उतार दिया, और कई लोगों को तो बर्डन करके रखा है. सैडलिंग काउंटलेस अदर्स. सैडलिंग का मतलब क्या है? बर्डन करना. सैडल एक्चुअली होता क्या है? हॉर्स के ऊपर जो सीट बिठा करके उसके ऊपर जो बैठते हैं, हॉर्स के ऊपर जो सीट रखते हैं उसको बोलते हैं सैडल. और सैडल का एक सेंस है बर्डन. ठीक है, सो वी से while saddling countless others with symptoms that can linger means लंबे समय तक चलता रहना, linger for months or years. Experts think that typical SARS-CoV-2 infection is likely to get less dangerous. Experts think that typical SARS-CoV-2 infection is likely to get less dangerous. ठीक है, as population immunity builds and broadens. ठीक है, पॉपुलेशन का इम्यूनिटी बढ़ता है और ब्रॉडन भी होता है, तो भाई ये लेस डेंजरस होगा. लेकिन द नेक्स्ट लाइन इज अ रियली वेरी गुड लाइन टू अंडरस्टैंड. बट कंसिडरिंग आवर करंट बेस लाइन, अगर हम अपने अभी के बेस लाइन देखते हैं कि भाई कितने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग बहुत सीरियसली इल हो रहे हैं, अगर उसको देखते हैं तो क्या बोलता है? लेस डेंजरस कुड स्टिल बी टेरिबल. Less dangerous could still be terrible, and it's not clear exactly where we are headed. Where we are headed का मतलब है किस ओर जा रहे हैं. Headed means where are you going, in which direction you are going. So where we are headed, we do not even know where we are going. He says it's very difficult to understand where it is taking us. When it comes to reinfection, we just don't know enough. रीइन्फेक्शन की बात होती है तो भैया अब तो जानकारी नहीं है. इन्फेक्शन क्या होता है तो इन 2 years टाइम वी हैव गैदर्ड इनफ knowledge about this virus, but reinfection के बारे में तो हो के ही पता चलेगा ना. So the author says when it comes to reinfection, we just don't know enough, says Emily Landon, an infectious disease physician at the University of Chicago. Okay, now will reinfection be really bad or not a big deal? I think you could fall down on either side.
Vinith Manacheri, a coronavirologist at the University of Texas Medical Branch, there is still a lot of gray. इनके अनुसार क्या है कि अभी भी बहुत सारे ग्रे, lot of gray का मतलब क्या है, बहुत सारे इलाका के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं. So if something is in the gray, what do we mean? What do we mean? You are not able to understand it clearly. So there is still a lot of gray. So there is still a lot to be learned. Well, so is the title good enough or it has to be changed? Now you tell me. बादल बेटा हमसे बात करना बेटा, ठीक है, हमसे बात करो तुम को मैं जस्ट कमेंट कर देना इसमें, मैं तुमको पकड़ता हूँ. I'll give you my number. Very good, Nityank. Absolutely. Now you tell me. Should be changed. Very good. Okay. Is it okay? Then, sir, when we have done all this, then the title does not seem to be a good title. COVID is here to stay. The passage has very clearly established that it is not going to be it's not going to be going on and on and on. The author is worried about even a less serious infection, lesser number of infections will still mean a lot many deaths and a lot of severe disease. Title should be changed. So what do we say? Now the title could be, koi title likhe batana. Two things you'll have to take into consideration. Yes, COVID is happening, but okay. So what should the title be? Give it a shot. कोशिश करना सब लोग. कोशिश करना बेटा. The title should be changed. How should the title be? COVID is ebbing, but seriousness is not. Something like this. COVID is ebbing. Ebbing माने slow हो रहा है, कम हो रहा है, but its severity is not. आया समझ में? कोविड स्लो हो रहा है, लेकिन उसकी जो सिविरिटी है वो कम नहीं हो रही. ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा. Okay, now this was the first passage for the first for this series. Okay, vocabulary through articles and editorials, articles from all over the world, editorials from all over the world. Indubitably, we'll also have some editorials from the Hindu also. But I'm not going to limit myself to the Hindu only, because I believe there are great magazines to read. There are great articles to read. Articles like these are very important. It improves our knowledge, the insight. And different people write in many different ways. अलग अलग स्टाइल से भी हमको, एक बार अगर आप हिंदू पढ़ोगे तो उसी के स्टाइल में रह जाओगे, फिर दूसरा चीज आपको समझ में नहीं आएगा. Okay, so it's important to read. Variety पढ़ना बहुत जरूरी है. That makes you better. Okay. Now let me see how many of you recall the words. अभी तक हमने जितने वर्ड्स सीखे उसमें से कितने वर्ड्स को रिकॉल कर पा रहे हो? ओके, लेट मी सी. मैच दिस, आराम से मैच करो. उसके बाद लेट मी टेक ऑफ माय पिक्चर, बिकॉज़ माय पिक्चर वुड बी ऑन द दिस वन. ठीक है, मैं पिक्चर हटा लेता हूं. मैंने पिक्चर हटा लिया. नाउ टेल मी, मैच इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन. Adarsh, yes, you're welcome. Read it and then tell me, for inevitable, what is the correct match? For inevitable, what is the correct match? One का मैच कौन सा है?
Nityank, you will read a passage fast in the in the practice sessions. Okay, in the practice sessions. For one, it must be inevitable is very good. Inevitable is C. Okay, inevitable is one is C. Inevitable. Very good. What about pummel? What about pummel? Nityank says two is H. Okay, let me see. Pummel. I said something about pummeling. Yesterday, GT pummeled uh, Rajasthan Royals. Absolutely, Abhinav. Very good. Very good, Abhinav. Okay. The word is pummel ka P. Batter karna. There are three words: batter, pound, and drub. All these mean pummel. Pummel का मतलब है जोर जोर से मारना. जोर जोर से मारना. Batter करना, pound करना, drub करना. Now, the pound is also the currency used in England. And pound also means to grind or to hit. Okay, batter, pound, drub. And then, what do we mean by meticulous? What is the correct option for meticulous? Yes, Shivangi, very good. What about meticulous? बहुत ही सोच समझ के काम करना. मेटिकुलस बहुत सोच समझ के काम करना, ध्यान देते हुए काम करना. शशांक वेरी गुड. दीक्षा वेरी गुड बेटा. अभिनव वेरी गुड. द आंसर इज हियर. Okay, it is meticulous is this one. Diligent, punctilious, scrupulous. You see, you have learned three, four words here: diligent, punctilious, scrupulous. And if you know words, please feel free to put it in the chat box. चैट बॉक्स में आपको जितने वर्ड्स आते हैं वो सबको डालना है. मैंने कोई वर्ड आपने देखा, बोला कि सर मेरे को तो इस पे 5 वर्ड आता है, मैं दिखाना चाहता हूँ, दिखाओ. इट्स अप टू यू. Okay, because as soon as you start showing off all these words, your vocabulary improves. Actually, there are some advantages to showing off also at the right place. Okay, so what do we mean by surge? Surge is, he says, H. Rise or fall slowly. Abhinav, yes, very good, you retracted it. Surge, जोरदार तरीके से बाहर आना. जोरदार तरीके से बाहर आना इस सर्ज. कोविड का सर्ज हुआ था, जोरदार तरीके से फैला था. फोर इज नो. दीक्षा, जोरदार तरीके से फैला था. मैंने इट वेंट ऑन अ इट वाज गश. इट वाज, आई टोल्ड यू द आंसर. आई टोल्ड यू द आंसर. बहुत तेजी से. फोर इज नो बेटा. फोर इज दिस. आई शो यू. फोर इज सर्ज इज दिस. Gush, rush, outpouring, efflux. Things if they come out very fast, when they come rushing out, we call it gushing. पानी वगैरह क्या करता है बताना. पाइप से जब पानी आता है, मोटे मोटे पाइप से बहुत जोरदार तरीके से पानी आता है, तो क्या बोलते हैं? गशिंग बोलते हैं, रशिंग बोलते हैं, हाँ, सर्ज बोलते हैं, आउटपोरिंग बोलते हैं, एफ्लक्स. फ्लक्स मीन्स टू फ्लो. Flux means to flow. So efflux is coming out. Okay, now what do we mean by ratcheting up? I'll give you a sentence. Okay, immunity is being ratcheted up with vaccination. Immunity is being ratcheted up with vaccination. Hmm. 5B ratcheting up क्या होना चाहिए था? This is
H. See, ratcheting is either going up slowly or coming down slowly. Okay, ratcheted up maybe going up slowly or coming down slowly. So this ratcheting is H. 5 is H. What about sixth, potential? I think potential you will be able to give the answer very easily. Potential you will be able to give the answer very easily. कौन सा बेटा शशांक लास्ट वाले ये ना लास्ट सेंटेंस तुम बोले ना भाई वो जो लास्ट वाला सेंटेंस समझ नहीं आया विल टॉक अबाउट इट डोंट वरी okay now to the next one now to the next one potential का मतलब क्या है sixth is probable very good sixth is probable you're right sixth is potential which is here sixth what about clip now this clip I've already told you explained it very well I think you will be able to recall clip का meaning क्या होता है 5 is no 5 is not E 5 is H beta this one let me write it here 5 is H 5 this is 5 seventh is fast slap cut clutch see all these meanings even if you even for a slap we call it clip slap मारने को भी clip करते हैं बोलते हैं ठीक है he clipped him का मतलब he slapped him ठीक है तो यहां पर मैं पोटेंशियल का हो गया तुम्हारा प्रोबेबल और क्लिप का हो गया तुम्हारा यहां पर मैं फास्ट स्लैप ये वाला व्हाट अबाउट स्लो डाउन स्लो डाउन इज वेरी इजी देन ओनली द लास्ट टू आर लेफ्ट फटाफट करो 8 is E very good no not 8th 7th is E 8th is 7th is E 8th is very good 8th is F 8th is F very good slow down decline या decrease emergence फिर एक ही रह गया emergence का मतलब बाहर निकल के आना appearance arrival surfacing okay so the answer is 1 is C okay 1C 2G 3A 4L 4I 5H okay 5H 6D 7E and 8F and 9B okay now try the next question इसको भी कोशिश करो some more and that is about 1 hour yes that's very nice about an hour of class is really good it takes time you see it takes a lot of sweat okay to be able to read understand become better I'm happy that you all stayed with me and every class is going to be like this okay every class is going to be like you have to learn so learning is a process it takes time what do we mean by sluggish sluggish का एक वर्ड बताया भी था मैंने one is no शशांक वो तो और कुछ बताया था डी नहीं है शशांक one is sluggish is slow lazy so this is sluggish one is H sluggish second वाला कोशिश करना
सुस्त, लेजी, एब्सोल्युटली। वन इज बर्डनिंग नहीं है बेटा, सुस्त, लेजी, स्टैग्नेंट और स्टैटिक, स्लगिश। जो एक ही जगह पे रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, बहुत स्लो चलना, लेजी होना, दैट इज द मीनिंग। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इनफिल्ट्रेट? व्हाट डू वी मीन बाय इनफिल्ट्रेट? गुड इवनिंग बेटा ट्रिपी, प्लीज बी हियर एट 7 o'clock। ठीक है, 7 बजे रहोगे तो बड़ा मजा आएगा, लाइव क्लास देख सकते हो, या तो फिर तुमको रिकॉर्डेड सेशन देखना पड़ेगा। रिकॉर्डेड सेशन में यू वोंट बी एबल टू इंटरेक्ट विद मी, दैट विल बी द इशू। शिवांगी, डी, इनफिल्ट्रेट इज डी, बर्निंग एनकम्बरिंग नो, नो बेटा शिवांगी। इनफिल्ट्रेट, अंदर घुस जाना, ना 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 ट्रिपी, दिस इन इज नॉट, इसको ये इनफिल्ट्रेट का मतलब नॉट नहीं है यहाँ पर, ये अंदर है। इनफिल्ट्रेट का मतलब क्या है? अब क्या होना चाहिए? अंदर घुसना, यस, वेरी गुड। टू एस एफ, पेनिट्रेट और इन्वेड, वेरी गुड, दिस इज पेनिट्रेट और इन्वेड, वेरी गुड। व्हाट अबाउट बारिंग, छोड़ के, बारिंग इज छोड़ के, तो कौन सा बताना? टू एफ, थर्ड वाला बताना, बारिंग, छोड़ के, तो छोड़ के कौन सा वर्ड है? इट इज थर्ड, बहुत बढ़िया, ये इसका है थर्ड। इट इज बारिंग लीविंग, बारिंग दिस संडे आई एम फ्री ऑन अदर डेज, बारिंग दिस संडे आई एम फ्री ऑन अदर डेज का मतलब ये संडे छोड़ के बाकी सब दिन मैं फ्री हूं। व्हाट डू वी मीन बाय इंटरवेंशन? याद रखना, वीन का मतलब होता है आना या जाना, तो इंटरवेंशन, बीच में आना, बताओ क्या मीनिंग होना चाहिए? इंटरमीनिंग का मीनिंग क्या होना चाहिए? थर्ड का आई, वेरी गुड, हाँ थर्ड का आई, हाँ वेरी गुड। फोर का जी, ओके, फोर का यू से जी, इंटरसेशन और इन्वॉल्वमेंट, वेरी गुड, दिस इज फोर इज जी, इंटरसेशन और इन्वॉल्वमेंट। व्हाट इज केडेंस? केडेंस तो बता दिया था, केडेंस वाज वेरी इजी। वीन इज अ रूट वर्ड, याद रखना। केडेंस का मीनिंग बताओ। वेरी गुड, केडेंस क्या लिखे हो ट्रिपी? जे लिखे हो या क्या? केडेंस का मतलब धीमे धीमे, वेरी गुड सुशांक, वेरी गुड शशांक, वेरी गुड बेटा। यस, हियर cadence is this one, टेम्पो और फ्रीक्वेंसी, टेम्पो और फ्रीक्वेंसी। अर्क करना, ये तो बहुत आसान है, सिक्स्थ इज वेरी इजी, सिक्स्थ इज वेरी इजी, अर्क। व्हाट डू वी मीन बाय अर्क? Very good. Sixth, irk is very, very easy. It is here, irritate or trouble. And what do we mean by shred? Shred to pieces. Oh, मैंने बता ही दिया, आंसर ही बता दिया, जाओ, तो मैं ही मार्क कर देता हूं, आंसर बता दिया तो मैं ही मार्क कर देता हूं। सेवेंथ, shred is here, cut to pieces, shred करना, तार तार फाड़ना। What is tangling? The virus tangles into every part, it was written. The virus tangles into every part लिखा हुआ था। What does it mean? The virus tangles into every part. सेवेंथ इज बी, वेरी गुड, वो तो समझ गया, तो मैंने खुद ही बोल दिया था इसलिए मार्क भी कर दिया था। चलो,
Jangling into every part. Very good. It is very good, Adarsh. Very nice, beta. Here, it is tangling is knotting or intertwining. जुड़ जाना, intertwine करना है ऐसे, हाँ? ऐसे से अगर मान लो ये हो जाता है, इसको बोलते हैं इंटरट्वाइन करना, एक दूसरे के साथ जैसे रस्सी बांधते हैं, उसको बोलते हैं इंटरट्वाइन. ओके, नाउ सैडलिंग. सैडल क्या था? हॉर्स के ऊपर जो रखते हैं सीट. द सीट दैट यू पुट ऑन अ हॉर्स इज कॉल्ड अ सैडल. सो आई सेड समथिंग फॉर इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? नाइन्थ का बताओ. नाइन्थ और टेंथ तो बहुत इजी. Ninth is D and 10th is very good. Ninth is D, okay, and 10th is uncertainty or doubt. A lot of gray means uncertainty or doubt. Okay, so 1H, 2F, 3I, 4G, 5A, 4G, 5G, 5A, 6C, 7B, 8J, 9D, or 10C. Very nice. I'm so happy that you all stayed in the class, and here it means like. I do not have to use green color. I forgot. Okay. Please like, share, subscribe, and hit the bell icon for notifications. Download our app now. Link is given in the box below. Okay, madam. And I want you here, come what may, come here, come क्या बोलते हैं, heaven or hell. I want all of you here. Okay. और अपने दोस्तों को भी बताओ कि भाई जरा मेहनत करने को तैयार हो तो भाई विनोद सर पढ़ाने को तैयार हैं. ठीक है. This old man is ready to put all his efforts into it. Why can't you? आपको तो आना ही चाहिए. मेहनत करने पर ही फल भी मिलता है. Okay? 1 घंटा तो बैठना चाहिए. 1 hour every day. It's a time well spent. Okay? And Sundays we will have our quizzes on the app. Okay. Now what should you do next? What do you want to do next? See, in one class your one tooth is gone. एक क्लास में एक दांत चला गया. अब 2 क्लास 3 क्लास हो गए तो कितने दांत चले जाएंगे तुम्हें पता नहीं. What should you do next? Revise this session a couple of times during the week and be ready for the quizzes on Sunday. The quizzes will be held on our own app, EnglishFunda app. The link is given below. Okay. Now, so this for the 6 days that we learn, that is जितने vocabulary सीखोगे, जितना अलग अलग किस्म के पैसेज सीखोगे, उस पर क्वेश्चन लगा के दूंगा. मैं बता रहा हूं तुमको सारा पैसेज बताने के बाद भी जो क्वेश्चन दूंगा ना, इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व, क्योंकि तुमको तुम्हारा दिमाग को झकझोर के मुझे पढ़ाना है ताकि यू डू समथिंग. Okay, that's why I started my own thing, because I was not satisfied the way I myself was teaching. क्योंकि भाई पाबंदियां होती हैं, रुकावट होती है, इतना नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते, जहां भी जाओ ये प्रॉब्लम रहती है. ठीक है, कितना करना है कितना नहीं करना. So I started my own show. I said that is the best thing to do. Okay, at least I'll have that satisfaction of teaching my heart's content. Okay, thank you all very much for being in this session, guys. And Adarsh, Diksha, Nityank, Tripi, Shivani, Shashank. Okay, all of you, you have a lot of potential. Okay, please be here in the classes and you'll do well. That's a promise I make. I'll teach you everything I know. I'll teach everything I know. Now it's for you to do well. Okay, thank you all very much. Bye-bye. See you. Acha, this video will be available as a recorded video in YouTube also. और ये इसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, हमारे ऐप में भी मिल जाएगा. ऐप में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. और टेस्ट सर ऑन संडे, याद रखना. बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑल. और बताओ. हाँ, नित्यांक का एक क्वेश्चन भी था, तो मैं तुमको ऐप में इसमें बताऊँ.